Good evening, children. So today we are going to discuss a very important topic of Hindu Marriage Act 1955. On what basis we can say that Hindu marriage is considered as a sacrament? So this is the evidence, this is the provision on which we can say that still Hindu marriage is considered as a sacrament. That is section 7. तो section 7 ये बात करता है कि संस्कार क्या है, क्यों है, ये बात करता है कौन सा संस्कार, कौन सा sacrament है. Section 7 it is a general provision. Section 7 general provision है सीधा सीधा कि अगर ग्रूम या ब्राइड का कोई भी सेरेमनी होए तो आप उसको सोलुमनाइज कीजिए, उसको पूरा कंप्लीट कीजिए, तो वो मैरिज का एक एसेंशियल पार्ट है और उसको कंप्लीट करने से एक वैलिड मैरिज बनती है. चिल्ड्रन, बट हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज सेरेमनी एक्चुअली. तो सेरेमनी बेसिकली इट इज of 3 types: शास्त्रिक ceremony, customary ceremony और statutory ceremony. शास्त्रिक ceremony means पंडित जी, काना, अग्निहोम, विवाह होम, कन्यादान, अग्नि परिग्रहण, ये सारे करना ये शास्त्रिक ceremony कहलाता है. Customary ceremony means when any type of customary ceremony like exchange of only bangles, ठीक है, it is being considered as customary ceremony. और statutory ceremony जैसा कि मैरिज ऑफिस में जाते हैं, exchange of garlands, तो ये भी एक जो है सेरेमनी हो सकती है. तो ऐसा कोई भी सेरेमनी एक आप अगर कंप्लीट करते हैं तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ वैलिड मैरिज. ठीक है, तो और ये जनरल हमारा एक कॉमन रिकॉग्नाइज्ड और एक्सेप्टेड सेरेमनीज है कन्यादान, विवाह होम एंड सप्तपदी. Section 7 subsection 2 children of the act is applicable only where saptapadi is included among the rites and ceremonies as in the brahminical form of marriage. अगर हम ये कहें, एक जनरल नोशन है लोगों के दिमाग में कि क्या सप्तपदी सेक्शन 7 में मैंडेटरी है? नहीं, ऐसा नहीं है. सप्तपदी is just an illustration, an example of ceremony, क्योंकि सप्तपदी basically is a widely recognized ceremony among Hindus. तो भाई 7 फेरा सब में होता है, किसी में 4 फेरा होता है, किसी में 3 फेरा होता है, किसी में 7 फेरा होता है. तो सप्तपदी एक बहुत ही कॉमन सेरेमनी है जो कि एक वाइडली रिकॉग्नाइज किया गया है पूरा हिंदू सोसाइटी, हिंदू कम्युनिटी में. और इसी वजह से दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट लॉजिक बिहाइंड दिस सेक्शन 7 की क्यों ये यूज किया गया है. बट अगर सप्तपदी किसी कम्युनिटी में नहीं है, किसी सेक्ट ऑफ हिंदू में नहीं है, जैसे ब्राह्मण्स में नहीं है, हिंदू बुद्ध में नहीं है, जैन में नहीं है, सिख में नहीं है, सिर्फ अनंत कार्य करते हैं, अगर ये नहीं है तो वहां पे सप्तपदी कतई भी मैंडेटरी नहीं है. इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी. तो इसका मतलब व्हाट इज द वाइटल क्वेश्चन? द वाइटल क्वेश्चन रिलेटेड विद सेक्शन 7 इज टू कंप्लीट एट लीस्ट वन सेरेमनी व्हिच इज ऑफ आइदर ग्रूम साइड और फ्रॉम ब्राइड साइड. तो कोई भी एक आप अगर कंप्लीट करते हैं तो वो एक पार्ट बन जाएगा वैलिड मैरिज का. तो पर सेरेमनी का होना इंपॉर्टेंट है, लाजमी है. There are certain questions regarding Lokhande case and Nagalingam Shivagami case regarding the importance of ceremony. If there is no completion of the ceremony, the marriage will be considered or treated as a bigamous marriage. As bigamous marriage, if the ceremony is accepted, but if the ceremony is not accepted, it will not consider a marriage. But if ceremony is accepted in the subsequent marriage, it will consider a case of bigamy. तो दोनों तरह की इंपॉर्टेंस है कि अगर सेरेमनी का एब्सेंस है, शादी नहीं माना, अगर सेरेमनी हो गया है तो बायगैमी मान ली गई है. तो इसका मतलब सेरेमनी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और किसी भी तरह की सेरेमनी को हम यूज कर सकते हैं, शास्त्रिक, customary or statutory ceremony. Any type of ceremony we can use here. Next important discussion is regarding live-in relationship. Children, live-in relationship under Hindu law and in Indian society, in Indian legislation, it is not still approved, or there is an absence of legislation for live-in relationship. Live-in relationship is considered as deemed like a marriage. Deemed like a marriage, or in the nature of marriage as
it is all about DV Act also, DV Act 2005 also. तो ये कुछ वैसा है. आप ये हम कह सकते हैं, in the other words we can say like this, कि such type of relationship deemed like a marriage and partners are projected themselves as husband and wife in front of the society, but their relationship must be recognized and considered by only and only law. तभी हम ये मानेंगे कि एक्स और वाई पार्टनर जो हैं वो हस्बैंड वाइफ जैसे हैं, जैसे वो रहते हैं, तो उनके राइट्स मैरिज हस्बैंड और वाइफ की तरह ट्रीट होने चाहिए. उनका रिलेशनशिप विवाह जैसा है, विवाह नहीं है, विवाह जैसा है, इन द नेचर ऑफ मैरिज, डीम्ड लाइक अ मैरिज, है ना. तो वो ये करेंगे इन द लाइट ऑफ सेक्शन 114 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एज वेल एज. तो यहाँ पे इसको प्रूव करना पड़ेगा. इट इज अ मैटर ऑफ प्रूव हियर कि शादी जो रिलेशनशिप है वो शादी नहीं है, पर वो रिलेशनशिप शादी की तरह ट्रीट किया जाए, माना जाए, पार्टनर्स को हस्बैंड वाइफ के राइट्स दिए जाएं या उसके अकॉर्डिंग वो डील किए जाएं. तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द केस. सो देयर आर सर्टेन leading cases in Indra Sharma versus VKV Sharma 2013. So it is basically, here we are talking about what does it mean, live-in relationship. It is generally a voluntary arrangement between two adults to live with each other either permanently or temporarily for sex or emotions only. ठीक है. And Supreme Court, it talks about the validity, what time period, though children, I would like to tell you here that there is no recognized time period for the acceptance of live-in relationship. के दो लोग आपस में, दो पार्टनर्स जो रह रहे हैं 2 साल से या 15 साल से या 20 साल से, तो उनका कोई जो है वो हस्बैंड वाइफ होंगे ही होंगे या उनका रिलेशनशिप मैरिज की तरह होगा ही होगा. तो देयर इज नो सच मैंडेट. It is all up to the discretion of the court. As per the instance of the court, it will be declared कि जैसा इस केस में आप देखिए बद्री प्रसाद वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलेशन एआई 1978 50-year रिलेशनशिप को उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, मैरिज की तरह लगता है, आप दो लोग हस्बैंड वाइफ की तरह आपने आपको प्रोजेक्ट किया है सोसाइटी में. तो इट सीम्स दैट यस ऑफ कोर्स यू आर विद इन द टर्म ऑफ मैरिज, ये ऐसा हो सकता है. तो बट इट मे और मे नॉट बी. Certain cases we have where the court did not accept the time period के 20 साल हो गए या 5 साल हो गए या 10 साल हो गए as in the as like marriage. तो because this is entirely there is absence of law. तो ऐसा कतई भी मैंडेट नहीं है कि जो कोर्ट ने कहा कि इतना टाइम पीरियड होना चाहिए वो मैंडेट होगा और उसे हम जो है मैरिज का फॉर्म एक्सेप्ट कर लेंगे. लिव इन रिलेशनशिप एंटायरली डिपेंड्स ऑन द इंस्टेंस ऑफ द कोर्ट ओनली. Now our next topic is all about a very important topic, that is registration of marriage. Children, in India, registration of marriage is still, as per Hindu Marriage Act 1955, it is completely an optional. It is completely optional for the couples, for the spouse, कि वो शादी का रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं, शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवा सकते. और but children, nowadays the things have changed by जैसा कि we have different policies. So as per that policies nowadays, what there is a dire need of marriage certificate. जैसा अगर आप joint account खुलवाना चाहते हैं बैंक में, सपोज कीजिए छोटा सा एग्जांपल है, तो मैरिज सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड कि साहब आप दोनों की शादी हुई है और एक मैरिज सर्टिफिकेट उसका प्रूफ है, तो वो उसके लिए. तो इसका मतलब कुछ पॉलिसीज है, बिकॉज ऑफ सर्टेन पॉलिसीज नाउअडेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इनडायरेक्टली कि एक मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज होनी चाहिए, एक मैरिज सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाना चाहिए मैरिज ऑफिसर के थ्रू में के थ्रू. तो नाउअडेज इट बिकम्स मैंडेट. Actually, for the purpose of registration of marriage,
under section 8 of Hindu Marriage Act, it is not, there is no mandate, it is not compulsory at all. So it is all up to the state government to make laws for it. It means the state government is fully empowered to make law regarding the registration of marriage, और वो अपने अपने डोमिसाइल का अपने अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसा डेथ का करते हैं, बर्थ का करते हैं, उस तरीके से मैरिज का भी वो रजिस्ट्रेशन अपना अपना स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना लॉ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, है ना. तो और a very leading case regarding this registration of marriage, Seema versus Ashwini Kumar, 2006 Supreme Court, and in this Supreme Court issued a guideline to the central as well as state that they are all free to make laws regarding the registration of marriage. Basically, it is basically a step forward for uniform civil code, that is Article 44 of Indian Constitution. And Goa is one of them. तो वो ऐसा कर भी रहे हैं, गोवा ने किया भी है और वो ऐसा रूल बना रहे हैं. तो that is, it means registration of marriage is not mandatory in India. So now here we are talking about the nullity of marriage. Nullity of marriage, we are talking about exclusively two provisions we have for the nullity of marriage, that is section 11 and section 12, children. But basically, what do you mean by nullity? Nullity basically means the impediment, the obstacles, the hindrances, जो परेशानियां हैं मैरिज के लिए. तो अगर वो ऐसा कोई मैरिज करते ड्यूरिंग द सोलुमनाइजेशन ऑफ मैरिज, ठीक है, if there is any problem, if there is any impediment, to how this impediment may be removed or it become a ground of annulment of marriage or null and void, nullity of decree pass हो सकता है, तो it becomes a ground. So here we are talking about the nullity, that is impediment. So that may be of two types, absolute impediment and relative impediment. So that is section 11 and section 12. Section 11 talks about void marriages and section 12 talks about voidable marriage. So void marriage, absolute impediment, that is section 5 subsection 1 अगर हम बात करते हैं, and subsection 3 as well as subsection 4, subsection 4 and 5, that is subpend as well as prohibited degree of relationship, and 5(1) that is monogamous. तो ये absolute impediments है कि शादी नहीं हो सकती until and unless for the purpose of subsection 1 में, तो there is, if there is any contravention for subsection 1 section 5, so it becomes an offense and under 494 495 IPC. And if there is solemnization and if there is any contravention of subsection 4 and subsection 5 of section 5, so that is subpend relationship and marriage between the degree of prohibited relationship. If customs are not allowing, so what happened? It becomes a matter of section 11, that is marriage may be declared as null and void. A decree will be passed there. And if I'm talking about relative means a qualified. It means parties. It is all up to the instance or discretion of the parties that they will continue their relationship. पता चला आपको कि साहब चाइल्ड मैरिज हो गई है, ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, पुराने लोगों का होता था, शादी किया, अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, चाइल्ड मैरिज कुछ लोगों का सक्सेसफुल है, काफी एज हो गई है, तो वो it is all up to the instance of the parties. They may or may not continue the relationship. तो basically it is a voidable marriage. ठीक है, फ्रॉड किया, गोरी लड़की दिखाई, काली लड़की से शादी कर दी, है ना, या गोरा लड़का दिखाया, काले लड़के से शादी कर दिया, ऐसा कुछ भी, there are certain examples. So what we can say, this is all up to the party only, whether they may continue, और चाहे तो कंटिन्यू करे और चाहे तो कंटिन्यू ना करे, ठीक है. तो it is all up to the parties. तो relative impediments, that is annulment, section 12 voidable marriage. तो हम वहां इसकी बात करते हैं. So let's have this void marriages, where we can say void marriage, where the court can pass a decree of null and void. That is marriage declared null and void if there is a contravention of 5(1), that is monogamous, 5(4) and 5(5), subpend and degree of prohibited relationship. Any of the marriage party may present a petition in the court. देखो, Hindu Marriage Act, children, it is not gender biased. बहुत अच्छे से सबको proper equal rights to both husband and wife. तो चाहे लड़का होए, चाहे लड़की होए, ग्रूम होए, ब्राइड होए, हस्बैंड होए, वाइफ होए, आके सीधे सीधे आप यहाँ फाइल कर सकते हो कि साहब सबपिंड में हो गया है, या मोनोगेमियस है, या डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड है. तो एनी मैरिज, मतलब party of marriage, they can easily present a petition in the court under section 11, and the court will declare
the marriage as null and void. Court may pass a decree of nullity at the instance of either party of the marriage void ipso jure. तो जो है मैरिज को हम जैसे अगर आप मोनोगैमीज करते हैं तो void ab initio है, खत्म है, शुरू से ही गलत मानी गई है उस मैरिज को. A party remarriage before disposal of appeal, such marriage would be a nullity. So this is all about section 11, and this is annulment of marriage under Hindu law. That is, I'm talking about section 12. That is, it tends to be more a creation of religion rather than a law. It refers to legal process to make voidable marriage null and void. Just example diya, if marriage is solemnized, if fraud is committed during the solemnization of marriage, if there is a consent, if there is no free consent, okay, if there is violation of subsection 3, subsection 2 of section 5, so it will be considered as a ground of section 12. Now, what do you mean by annulment? Marriage needs some legal requirements at the time of solemnization, but if not meet the marriage, considered to have never existed in the eye of law, and this process is called annulment. Then it is all about voidable marriage, children. Void impotency, a very important ground. Grounds, it means incapacity to consummate the marriage, which is one of the objects of marriage. Amendment 1976, consummation means complete and ordinary intercourse. The true test of impotency is the practical impossibility of consummation. So that is P versus K case, AII 1982, Supreme Bombay High Court. So there are certain, if unsoundness of mind, one suffering from mental disorder, consent obtained by force or fraud, or it means no free consent, or a respondent at the time of marriage pregnant by some person other than the petitioner. So on these bases, on these grounds, basically marriage may be declared as annul or null and void. So what is the basic requirement to justify all these grounds? What is required? A specific time period is required. It means if 1 year time period has also been had expired already, suppose after the disclosure of the fact, है ना, आपको पता चला अगर ये ग्राउंड है और अगर ये ग्राउंड है फोर्स या फ्रॉड का है या अनसाउंडनेस माइंड है, अगर 1 साल हो गया है, आपको डिस्क्लोज फैक्ट होने के बाद में 1 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद में कोर्ट जनरली नॉट अलाउड सच ग्रीवियंसेस, ऐसा रिलीफ नहीं देगा, मैट्रिमोनियल रिलीफ नहीं मिलेगा इफ द फैक्ट इज डिस्क्लोज टू द पार्टी, है ना, एंड द पार्टीज आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू इट मस्ट बी प्रूव्ड इन द कोर्ट. अगर आप करते हैं कि साहब 1 साल तक मेरे को प्रेशर में रखा या पता होने के बाद मुझे प्रेशराइज किया गया, फोर्स किया गया, है ना, और मैं आई वाज अनेबल टू सबमिट माय grievances to the court, I'm not able to put my problem in front of the court. So what happened if the court is satisfied with this reason? The court may allow your petition also, but this is a very general rule, this is a very general mandate. A time period has already been fixed, that is 1 year. After the disclosure of the fact, अगर आप 1 साल हो जाता है और फिर भी उसके बाद consummation is going on, और आप, तो इसका मतलब बेसिकली कॉन्डोनेशन हो गया है और उसके लिए फिर मैरिज रिलेशन जो है वो खत्म नहीं करेगा. एक्चुअली व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दिस लॉजिक कि क्यों 1 साल रखा गया? What is the basic objective of the court, children? Family court is just to maintain the institution of marriage, not to dissolve the marriage easily. तो बहुत मतलब इजीली नहीं, आप कोशिश करें कि ये रिलेशन चले, जस्ट टू मेंटेन द पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी. तो ये कंटिन्यू चलना चाहिए, और इसीलिए दिस इज द ओनली लॉजिक कि अगर जनरल लॉजिक है, जनरल मैंडेट है कि अगर 1 साल हो जाता है तो उसके बाद में जो है उसको बाद में देखा जाएगा जनरली कि आपको ये रिलीफ अवेलेबल नहीं है सेक्शन 12 का. बट इफ द पार्टीज आर एबल टू प्रूव इट कि क्यों खत्म हो गया है टाइम या क्या है, तो कोर्ट विल गिव यू द रिलीफ, तो कोर्ट दे भी सकता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल डिस्कशन रिगार्डिंग सेक्शन 12, एंड नाउ इट इज ऑल a matter of matrimonial remedies under Hindu law.
So there are certain matrimonial remedies under Hindu law, children. I have already told you it's all about section 9, 10 and 13 exclusively. Section 9 talks about restitution of conjugal right. Section 10 is judicial separation, and section 13 is divorce. So section 9, for the purpose of section 9, this is amended in 1979. This section was amended after the marriage laws amendment act 1976. Now we have a term restitution of conjugal rights. So very first of all, we have to understand that what do you mean by restitution, children? Restitution means to restore, to unite, एक बार फिर से बनाए, जोड़े relationship को. Conjugal rights, conjure, basically it derived from the French word conjure. तो conjugal rights basically जो विवाहिक रिश्ता है उसको जोड़ा जाए, फिर से एक बार रेस्टोर किया जाए, उसको फिर से यूनाइट किया जाए. तो दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन. इफ without any reasonable cause, if there is any problem in the relationship and the parties are withdrawing themselves from the society of each other, so what is required? The restoration of relationship is required. So this is to be done by this section 9 of Hindu Marriage Act 1955, and the court basically give relief to the parties if it is demanded and becomes genuine and admissible or relevant. So here we are talking about restitution means restoring to a party. Conjugal means to unite. It is available, of course, to both an husband and wife. And if the parties petition filed to the district court only when either party is living separately without any reasonable cause. It means the parties are withdrawing themselves from the society of each other. कि साहब पति पत्नी के साथ comfortable नहीं है. Comfortable मतलब वो उसके साथ रहना नहीं चाहती, या पति पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता, कोई रीजनेबल कॉज नहीं है, कोई ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, कोई हैरेसमेंट, इनजस्टिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या लॉजिक हो सकता है, क्या रेस्टिट्यूशन हो सकता है? This concept of section 9 was first of all introduced in India by Monshi Buzlur Rahman versus Samsunija Begum 1867, but this concept was not recognized under Muslim law, children. ठीक है, this principle actually provided by the English law and derived, देखो Jewish law का principle है, but actually elaborated by English courts. और इंडिया में in India law when we were talking, we have already accepted this law in Hindu, as per Hindu Marriage Act 1955 we have already accepted. तो यहाँ हमने उसको accept कर लिया as it is. Now, what is the constitutionality? What is the constitutionality of restitution of conjugal rights? Number of times this section was challenged in the light of section 14, in the light of article 1421. Okay, no one can force a person to live with that person with whom he or she is not comfortable. अगर मैं अपने पति के साथ comfortable नहीं हूँ, पति मेरे साथ comfortable नहीं है या रहना नहीं चाहता है, जबकि कोई logic नहीं है, कोई reasonable ground नहीं है न रहने का, तो ये कहा गया कि आप कोर्ट पिटिशन देता है कि नहीं आप रहिए साथ में, तो एक तरीके से it is basically a type of a force, or the court is trying to create a pressure or a force on the party to live with the other one. So it was challenged. Number of time it was challenged in different cases. It is actually this section 9 actually is against the concept of article 14 and article 21. Here it is. It is that in Sarita case that it was held that this section 9 is violative of article 14 and 21, but the constitutionality of section 9 is proved in Harvinder, in Saroj Rani case, of course. So it has been decided that no, this section is no more violative of article 14 and 21 of Indian Constitution, and it is all this section is all because of just to maintain the institution of marriage. So there are certain
A husband has a right to decide the place of matrimonial home. Kailashwati, both husband and wife has the equal opportunity to decide the matrimonial home. Swarajgar case, and then Dharmendra Kumar Usha. So these are very important cases. Now, this is all about judicial separation, children. The judicial separation, a very important matrimonial relief provided under Section 10 of Hindu Marriage Act 1955. What is the difference between 10 and 9? First of all, we have to understand. पहले आप ये देखिए, so you are able to understand. आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा Section 10 क्या है. Section 9 में the court is basically putting a pressure on the party to live with the other one if they are withdrawing themselves from the society of each other without any reasonable cause, है ना. तो वो कोर्ट कहता है कि नहीं आप साथ रहिए डिक्री पास करके. जुडिशियल सेपरेशन में कोर्ट कहता है लिव सेपरेटली. कोर्ट पास अ डिक्री टू द हस्बैंड एंड वाइफ फॉर टू लिव सेपरेटली. आप अलग रहिए, तो जिससे आप अलग रहिए एक दूसरे से, और थोड़ा अपने कंडक्ट, अपने बिहेवियर को चेंज कीजिए ताकि आप इंस्टीट्यूशन को मेंटेन कर सके, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को मेंटेन कर सके. सो दिस इज द लॉजिक, यू नो. And what is the difference? That now there is basically judicial separation, children, is considered as a lesser form of divorce. क्योंकि divorce में भी the parties, the court basically is the court tells the party to live separately, and there is a termination of relationship. Section 13 talks about the termination of relationship, but here for the purpose of Section 10 we are not saying it is a termination of relationship, it is a suspension of relationship for a time only. कि आप कुछ समय के लिए दूर रहिए और हो सकता है आपका माइंड सेट हो जाए, आपके कंडक्ट बिहेवियर में कुछ चेंज हो और आपको ये लगे कि यू कैन कंटिन्यू विद द मैरिज. ठीक है, आप शादी को कंटिन्यू कर सकते हैं, आप शादी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, स्पाउस के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं. देयर इज नो एंड ऑफ रिलेशनशिप. Now, this section was amended by Marriage Act 1976. Of course, it is a lesser form of divorce, or it is only allowed when marriage is valid, of course. So it means there is no separation in live-in relationship. There is no concept or restitution of conjugal right in live-in relationship. Divorce भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो तभी होगा जब marriage होगा, है ना. And what is the condition in the decree of Section 10? Here it is a separation of husband and wife under order of the court which puts an end to cohabitation. कि आप जो है वैवाहिक जीवन आप नहीं जी सकते, अलग रहिए, अलग आपको रहना है by the order of the court. After the decree of this section, marriage still exists. So this is all about the important matrimonial relief, children. Thank you so much.